Good morning, students. Today we'll do the first lecture of direct indirect. So, direct indirect is very easy if you understand it carefully, means if you listen to me very carefully and try to apply the rule carefully. So direct indirect is very easy, but if you don't practice it and forget the rules, how to change the tenses and what is the rule of this tense and all that, so in that way it will be very difficult for you, because in the board classes direct indirect is all the students consider it very difficult. So according to me it is very easy. So please listen to me very carefully. When I am talking to a person who is in front of me, so the talking between me and that guy or that person is direct. But if I am talking to that person and that person convey the message to the other or third person in his or her way, so this thing will be indirect speech. Okay, उर्दू में बता रही हूँ मैं, जैसे अपने सामने खड़े हुए किसी शख्स से बात कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट स्पीच कर रही हूँ, उसके साथ डायरेक्ट बात कर रही हूँ। लेकिन मेरे साथ जो बात हुई है, अगर वही शख्स जाकर किसी तीसरे बंदे से करता है तो वही बात इनडायरेक्ट हो जाएगी, वो क्योंकि वो शख्स या मर्द या औरत अपने तरीके से उस बात को बयान करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ रिटन हियर, he says to his friends, I am a brave boy. This is a direct speech. Okay, this is a direct speech. वो डायरेक्ट एक मतलब कि अपने दोस्तों से कह रहा है, he says to his friends, अपने दोस्तों से कह रहा है कि I am a brave boy, मैं एक बहादुर लड़का हूँ। ठीक है, लेकिन जब ये थर्ड पर्सन तक ये बात पहुँचेगी, ठीक है, तो वो क्या है, वो कैसे होगी, वो इनडायरेक्ट कैसे बन जाएगी, देखते हैं। Says will be converted into tells. Okay, says will be converted into tells. He tells his friends. We will not write down to here. Okay, when we do indirect speech, so we will write down in that way. He tells his friends. We will not write down to. Okay, and all the commas will be removed. So instead of commas we will write down here that. इन commas को remove करने के लिए हम क्या लगाएंगे, that. He tells his friends that he is a brave boy. I will be converted into he. Okay, and you already know that we use am just with I, not with he. So we have to write down is with he is, and we have to write down the same words here, he is a brave boy. So in that way we can say that this is indirect speech, क्योंकि उसने अपने तरीके से की है ना। ठीक है, उसने अपने तरीके से कहा, इसलिए जैसे उर्दू में होगा, वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं एक बहादुर लड़का हूँ। इनडायरेक्ट क्या होगा, वो तीसरे बंदे से कैसे कहेगा, वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो एक बहादुर लड़का है। इज इट क्लियर? एंड नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग,
He says to his friends, she says to her mother, Ali says to his brother. This type of beginning sentence is called reporting speech, and the remaining sentence, which are in inverted commas, it is called reported speech. रिपोर्ट दी जा रही है ना, यहाँ पे रिपोर्ट की जा रही है और यहाँ पे रिपोर्ट कर दी गई है कि आई एम अ ब्रेव बॉय. रिपोर्टेड स्पीच. ओके, सो आई वांट टू clarify again. Means in the direct sentence we have the two parts. Reporting speech, the first part is belong to reporting speech and the second part is belong to reported speech. Okay, he says to his friend, I am a boy, I am a brave boy. When we say anything directly to other person, this type of sentence will be direct sentences, and when we convey the message to the third person and send the message in our own way, so it will be indirect speech. He tells his friend that he is a brave boy. Okay, so you have to memorize a chart here. I'm going to show you here. You have to memorize this chart carefully. It is compulsory for you. Learn by heart these words, because when we will do direct indirect, so you have to means these words will help you out to do direct indirect. Means that will be changed into this, those will be these, then will be now, now there will be here, before will be ago, ago आना चाहिए, यहाँ पे age लिखा हुआ ago. That day will be today, the next day and following will be tomorrow, the previous day yesterday, the previous night last night. Okay, हेल्पिंग वर्ब, ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा टेंसेस के चेंज होने में. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑल प्रेजेंट टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इनटू पास्ट टेंस. ओके, सारे पास्ट टेंस में चेंज हो गए. अब देखो डायरेक्ट में है इज एम, तो इज एम चेंज होंगे वॉज में. आर विल बी चेंज इनटू वर, हैज़ हैव विल बी चेंज इनटू हैड, do not and does not will be changed into did not. Okay, second form जो change होगी third form में. was were अगर आता है तो वो had been में change हो जाएगा. will shall है तो would में change हो जाएगा. may है तो might में, has to have to had to में बदल जाएंगे. has been have been बदल जाएंगे had been में, और can बदल जाएगा could में. And listen to me very carefully. Means if we have the word or means direct tense in a means in a present tense says, तो अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होगा. प्रेजेंट टेंस है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में रहेगी. लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी. But don't worry about the tenses, gradually we'll learn it, so don't worry about it. और अभी जो हम करेंगे वो प्रेजेंट टेंस करेंगे, यानी सिंपल टेंसेस करेंगे जिसमें प्रेजेंट टेंस आएगा, टेंस चेंज नहीं होगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट we'll do the practice of affirmative sentences. Okay, thank you.